Hello and a very warm welcome to our special edition, the Question Hour show from the Parliament House complex, the show where we bring you important unstart questions asked by the members of the Rajya Sabha in the last session of Parliament. I'm Kriti Mishra and joining me is my colleague Rajat Kain. Well, thanks Kriti and thanks to your viewers for joining us in this edition of Question Hour. And also we hope that you're safe and sound in the times of coronavirus pandemic. Absolutely, Rajat, we do hope that. But Rajat, Question Hour is a very important aspect in India's parliamentary democracy because it gives an opportunity to the members of parliament to ask questions from the government as ministers are collectively accountable. There are different types of questions, the start questions, the unstarred ones, and also the short notice questions. Start questions are those questions of which answers are given orally on the floor of the House. Whereas unstarred question is the other category of the questions where answers are deemed to be laid on the table of the House at the end of the proceedings of the day. And in this show, we bring important unstarred questions asked by the members of the upper house in the last session of Parliament or last session of the Rajya Sabha, and the answers given by the government in written format. So Rajat, let's begin the show. And the first question in this edition is from member Dr. Anil Agarwal, and this question pertains to the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. Although this question was asked in March this year, but we are still seeing the impact of locust attack. Now let's see what the member asked. So the member asked whether it is a fact that locusts have damaged crops across the country during the last 2 years and also till now, and the compensation paid by the government to the affected farmers whose crops have been damaged. Giving a detailed reply, the ministry said that during the financial year 2018-19, there was no locust attack in India. And during financial year 2019-20, Gujarat state government has reported the locust has damaged crops, and total estimated damaged crop area was 18,727 hectares, out of which damage of 33% of more is estimated in 13,881 hectares. Now, Rajasthan state government has reported the total affected area due to locust attack during the year 2019-20 in the state is 1,49,821 hectares, out of which total damaged crop area of 33% of more is 1,34,959 hectares. Punjab state government has reported that a small little group of locust adults were spotted in few patches which have been adequately dealt with. Till date, no loss of any crop has been reported in this Rabi season of the year 2019-20. Now, Haryana state government has reported that in January 2020, the locust appeared in Rajasthan adjoining village of Sirsa. No damage of crop has been reported. Also, the ministry said that state governments of Gujarat has reported that they have done a primary assessment of crop loss due to locust attack. The relief package is announced where crop loss is 33% and more of paying relief to the farmers of affected districts in the state. Now, assistance of 13,500 per hectare from the State Disaster Response Fund and additional 5,000 per hectare from state budget will be provided for maximum up to 2 hectares to the affected farmers. Now, total provision for this relief package is 32.76 crore for appropriate 11,230 farmers. The payment to the affected farmers is in progress. And adhering to social distancing, member Dr. Anil Agarwal spoke to us through virtual platform, and this is what he had to say on government's response to his question. He also made certain suggestions to the government. Listen in. And joining us on the Question Hour show through virtual platform is Rajya Sabha MP Dr. Anil Agarwal. Dr. Agarwal, welcome to Rajya Sabha Television and thank you so much for joining us. सर, हालांकि ये सवाल जो आपने पूछा था वो मार्च के महीने में ही पूछा था, लेकिन जो लोकस्ट अटैक है उसका असर हमने देखा अभी भी, फिलहाल भी। कितना महत्वपूर्ण मुद्दा और क्या किया जा सकता है किसानों के लिए? ये तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैंने पिछले सत्र में ही ये बहुत जोरों शोरों से उठाया था और उस समय सरकार ने इसमें हम लोगों को रिटर्न भी दिया था और सदन में भी थोड़ी चर्चा हो पाई थी। देखिए, ये कोरोना वायरस की तरह है, जब तक ये ज़ीरो नहीं होगा तब तक हम इससे मुक्ति नहीं पा सकते। लोकस का ये है कि रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर जरा सा भी बच जाता है तो वो रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो ये हर बार जो आ रहा है पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से अटैक होता है और उसके बाद पूरे देश में आसपास होता है। जब वो आता है तब हम लोग उस पर एक्शन करते हैं।
मेरा इसमें ये मानना है कि जब वो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से शुरुआत हो, वहीं हमें बिल्कुल वॉर लेवल पे जो अभी हमने काम शुरू किया है, उसमें हम लोग केमिकल्स का छिड़काव है, हेलीकॉप्टर से अभी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है, वो सारा चीज़ें वहीं बॉर्डर पे ही हो जाएं, ताकि वो आगे ही ना बढ़ सके। अभी क्या रहा है, जितना वो आगे बढ़ रहे हैं हम उनको चेस कर रहे हैं, तो वो कुछ कुछ हमारा नुकसान कर पा रहे हैं। और अगर सरकार ने बहुत ज़्यादा अलर्टनेस ना दिखाई होती तो और बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता। अभी सरकार की सतर्कता के कारण, लोगों की सतर्कता के कारण कम नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको इनिशियल लेवल पे बॉर्डर पे ही इसको रोक लेंगे तो बेहतर होगा। इनका एक दिन में लगभग 100 किलोमीटर तक ये लोग ट्रैवल कर लेते हैं, तो इसको हमको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि किसानों का नुकसान है, अल्टीमेटली देश का नुकसान है और सबका नुकसान है। जी हाँ, सरकार ने विस्तार से जवाब देते हुए ये भी बताया कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है उसको उपयोग में लाया जा रहा है। देखिए, इसका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा। और स्टेट गवर्नमेंट जैसे ये जो शुरुआत होती है राजस्थान की तरफ से शुरुआत होती है, तो अगर राजस्थान गवर्नमेंट ने इसमें शुरू में बहुत स्टेप ले लिए होते तो ये प्रॉब्लम ना आती। जब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से बात निकल गई तब सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने अप्रोच किया, एंड हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली इस पर काम किया। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, वो नोएडा आए थे, वहाँ पे उन्होंने हेलीकॉप्टर, प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेके छिड़काव शुरू किया। जो लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारा काम कर सकता है वो सारा काम हो रहा है। लेकिन अगर राजस्थान गवर्नमेंट ने वहीं पे इसको रोक दिया होता बॉर्डर पे तो ये समस्या इतनी बड़ी नहीं। आगे जाकर क्या कुछ किया जा सकता है ताकि किसानों को नुकसान ना हो? क्या कुछ सुझाव हैं आपके सरकार के? देखिए, केंद्र सरकार इसमें बहुत बारीकी से इसका अध्ययन कर रही है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं इस फील्ड के, वो इस पे काम कर रहे हैं, और मुझे पक्का लगता है, पूरा यकीन है कि अगली बार ये समस्या इतनी बड़ी नहीं होगी और हम लोग इसको बॉर्डर पे ही रोक पाएंगे। जो केमिकल का छिड़काव है वो होगा, जो बाकी भी सारे हैं, जैसे इसमें कुछ अल्ट्रा वायलेट रेस को भी यूज़ किया जा सकता है, उसको किस तरह से किया जा सकता है वो एक अलग विषय है। तो वो सारा काम हमें करना पड़ेगा और हम लोग, केंद्र सरकार इसमें कर भी रही है। राज्यों को भी इसमें अपनी सहभागिता उतनी ही मुस्तैदी से करनी पड़ेगी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। जी बिल्कुल, और राज्यों की आपने बात कही, और किसानों के लिए भी क्या कोई आप ऐसा सुझाव देना चाहेंगे कि वो इम्प्लीमेंट करें? किसान भाई जो उनका लोकल लेवल पे होता है वो कर रहे हैं, जो वो लोग उसमें वो स्पेशल जैसे खोल नगाड़े बेच रहे हैं, जो उसमें और भी उनकी जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इसको हमको बजाय लोकल लेवल पे किसान भाई को के ऊपर छोड़ने का, इसको साइंटिफिक तरीके से अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा इसमें सफलता मिलेगी। किसान भाई क्या करते हैं, वो जो भी अपने लेवल पे कर सकते हैं करते हैं, तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है। आज मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने कुछ किया, वो डाइवर्ट होकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया, वो भी तो अपना ही क्षेत्र है ना। अल्टीमेटली हमें ऐसा प्लान करना है कि वो बॉर्डर ही ना पार कर पाए, और जहाँ भी शुरुआत हो उसी लेवल पे इसको पूरी तरह से क्रश कर दिया जाए, सो दैट कि कुछ भी नुकसान ना हो। क्योंकि ये जब चलना शुरू होते हैं, एक एक दिन में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जिसको फसलों को ये नष्ट कर देते हैं या खाते हैं या जो भी है, तो उसको हमको इनिशियल लेवल पे ही साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा, और इसका मुझे लगता है कोई सॉल्यूशन है नहीं। जी बिल्कुल, आप हमसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े, आपने हमसे ये बातें की, आपने अपने सुझाव सामने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए डॉक्टर अग्रवाल। Well, the next question was asked member Shantanu Sen from Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The member asked about the status and details of Udan scheme that is being run for youth of Jammu and Kashmir and the details of budget allocated, released and utilized for the scheme since its inception. Responding to this query, the government says that Udan is a special industry initiative by Ministry of Home Affairs for the youth of Jammu and Kashmir, especially graduate and postgraduate, to provide them exposure to the best of corporate India. The program aims to provide skills, training and enhance employability of unemployed youth of Jammu and Kashmir. The scheme is being implemented by National Skill Development Corporation,
The scheme was approved as a central sector scheme with share of Ministry of Home Affairs of rupees 750 crore and 250 crore to be contributed by corporates for a period of 5 years with effect from 2011-12 to 2015-16. Since its inception till 2019-20, 458.05 crore was allocated and released to NSDC, which is National Skill Development Corporation, out of which 434.51 crore was utilized. And so far, 38,942 candidates have completed the training and 24,189 jobs were offered and 18,694 finally got employed under URAN scheme. And moving on to the next question that has been asked by member Ramnath Thakur, and this question pertains to the Ministry of Rural Development. And the member has inquired about 20-point program implemented by the earlier government. In its response, the ministry said that as an effort of government to expand capabilities of its citizens, package of programs comprising schemes related to poverty alleviation, employment generation, education and health called the 20-point program of the TTP was operational since year 1975. Now, in view of the changing scenario of the country over the years, the program has been restructured thrice in the year 1982, 86 and 2006. The present program, now called 20-point program 2006, is in operation since April 2007. The TPP 2006 has 20 points covering 65 items for the benefit of both the rural and urban people, which coincide with various programs and schemes of government administered by central nodal ministries and departments. The Ministry of Statistics and Program Implementation has been given responsibility for the monitoring of this program. Now, the progress made under the 20-point program of 2006 during 2017-18 is available on the official website of the Government of India. Well, moving on to the last question of this edition of the show that was asked by member Sanjay Raut from Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. The member asked whether it's fact that e-commerce is witnessing a spurt in online food ordering and delivery service in the country during last 3 years, and if so, what are the details, and also whether attention of government has been drawn towards large number of complaints about food quality and hygiene standards of such online food delivery services, companies and restaurants, and what are the details of the same. Well, the response given by the government is an affirmative, and the government says that online food ordering and delivery services have increased during the last 3 years. And the details of the number of consumer grievances filed with National Consumer Helpline in the last 2 years also shows an increasing trend. The government further says that some instances of sale of substandard food being delivered through online food delivery service platforms have come to the notice of FSSAI. Whenever any instance of sale and supply of substandard food items through such platforms is received, the same is taken up with concerned Commissioner of Food Safety of States or UTs. Food Safety and Standards Act of 2006 and rules and regulations framed thereunder have provisions to ensure food quality and hygiene. The implementation and enforcement primarily rests with the state governments or the UTs. Well, that's it. That brings to an end of this edition of the show Question Hour. Thanks for watching us on Rajya Sabha TV. And do take care and stay safe.